पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, हाउ डज ही रीच सेफली। ये क्वेश्चन 2014, 15 और 19 में आ चुका है। नरेटर डिसाइडेड टू रिस्क गोइंग थ्रू द डार्क स्टॉर्मी क्लाउड्स बिकॉज ही वॉज ईगर टू मीट हिज family. Everything was black inside the cloud. He was unable to see anything outside the plane. He was lost in the black storm clouds. The old aeroplane jumped and twisted in the air. All his instruments were dead. He was totally lost in the storm. नरेटर ने डिसाइड किया कि वह रिस्क लेगा और स्टॉर्मी क्लाउड्स में से होकर जाएगा क्योंकि उसे अपनी फैमिली से मिलना था। उसने निश्चय किया कि वह अपनी फैमिली से ब्रेकफास्ट के टाइम पे मिलेगा, लेकिन जो उसका ओल्ड एरोप्लेन था वो जंप किया, ट्विस्ट किया, हवा में लहराया और उसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे उन सब ने वर्क करना बंद कर दिया। सडनली ही सॉ अनदर एरोप्लेन which had no lights on its wings. He pointed him to follow him. The plane turned towards the north and he followed him. Narrator was left with fuel for just above 5 minutes. Now he was frightened. The black aeroplane started moving down and he came out of the clouds. Now he saw the light of the runway, but the aeroplane disappeared. तभी उसे अचानक एक ब्लैक एरोप्लेन देखा जिसने उससे इशारा किया कि उसके पीछे पीछे है। उसका फ्यूल ख़त्म होने वाला था, वो डर गया, लेकिन तभी वह ब्लैक एरोप्लेन नीचे उतरने लगा। वह भी नीचे उतरा। अब उसे रनवे की लाइट दिख रही थी, सब कुछ दिख रहा था, लेकिन वह एरोप्लेन गायब हो चुका था।